तो हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आप सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू हॉगवर्ट्स लेगेसी सीरीज के वीडियो में। और अगर तुम लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो, तो मैंने बहुत सारे मेन मिशंस पे फोकस कर लिया, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा मेन मिशन से हम लोग ब्रेक लेते हैं और हम लोग को जितने भी ये 3 मिशंस करने हैं, हम लोग ये 3 मिशन करते हैं। और प्लस हमारे को ये ब्रूम अपग्रेड चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ एक ब्रूम अपग्रेड भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के वीडियो में करूंगा मैं ब्रूम अपग्रेड। फिर सरप्राइज मीटिंग करना है पॉपी से मेरे को। फिर उसके बाद मेरे को नाटी से बात करना है हॉग्समेड के बाहर। फिर मेरे को सेबेस्टियन से बात करना है, सेबेस्टियन और एन से बात करना है आउटसाइड फील्ड क्रॉप पे। तो ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। तो गाइस बिना किसी देरी के यार, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो मैन। ओके, तो मैं आ चुका हूँ हॉग्समेड एक बार वापस से, और इस बार फिर से मेरे को वापस से बात करनी होगी। ओके, तो 4000 का अपग्रेड आया हुआ है, मैंने अपग्रेड ले लिया। अब आई थिंक मेरे को ये मेरे से बात करेगा मे बी। या You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but You'd like me to report back with even more flight details. you know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. ओके, तो गाइस अब हम लोग इमेल्डा को ढूंढने जा रहे हैं। देखते हैं इमेल्डा रील्स को। ओके, इतनी 5000 मीटर दूर जाना है, अरे बाप रे। और यहाँ पे मेरे को एक और मिशन दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार ये भी कंप्लीट कर लेता हूँ। वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो यार, जितने साइड मिशन हो सके मैं उतना कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। ये रही नाटी हमारी। I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Okay, where can I find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Okay. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, Mr. or Bickle they may and have Hogwarts. evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Okay, let's go. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Okay. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Speak with यार मेरे में बहुत सारे मिशंस आ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले उस झाड़ू वाले बंदे का मिशन कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, जो झाड़ू वाले बंदे ने मेरे को जो बोला था, मैं पहले वहां जाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका जो नाटी का जो मिशन मेरे को दिया गया है अभी, मैं नाटी का मिशन पहले हटा देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू अबॉन्ड दिस क्वेस्ट? नहीं यार, ओह शिट। ओके व्हाटएवर, मेरे को पहले बात करनी पड़ेगी इन तीनों से। तो मैं सोच रहा हूँ पहले इन तीनों से बात कर लेते हैं जल्दी से जाके, और फिर देखते हैं आगे और क्या किया जा सकता है। तो मैं पहले नाटी का ही मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ गाइज। शिट, मैंने गलती कर दी। ओके, एक अंदर है, अंदर है या अलग तो रही है अंदर।
अंदर ऊपर की ओर है. ओके, 3rd फ्लोर में है तो मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, ये रही. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Okay, तो मैं क्या पूछूं इससे? Does the note confirm Are kidnap? you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Okay. और क्या पूछा जाए इससे? जरा पूछ के देखते हैं Why ये भी. wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Oh, okay. तो मतलब बेसिकली Have you इसका helped हस्बैंड Harlow को since your किडनैप husband करके was taken? इसको किडनैप No, वो किया जाएगा I'm ब्लैकमेल. worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be अरे careful. टेंशन sir. मत ले. Please Daisy, don't put yourself in Rabi, danger. रेबी, डेजी रेबी. ओके. ओके, तो एक नोट मिला मुझे, Some मैंने पढ़ा evidence नहीं. worth hanging on छोड़ो, to. कौन पढ़ेगा? Thank you. अब जरा एक बार बाहर जाना है मुझे. अब देखते हैं किससे Now, बात to करना होगा find मुझे. Mr. Bickle's other two friends. Oh shit. जल्दी से पहुंचता हूँ मैं उधर. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Okay, तो ये Please मेरे tell me you को didn't take it. ऑटो मिला है. Perhaps it's been... Mr. Dibble, may I speak with you? Mr. It's Dibble, about okay. Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf हम लोग from the इतने funny counter, लग रहे हैं ना इस pocketed mask it में, and by God. smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Okay. About the note. Could you give me a bit more detail about the note?
That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Okay. How are you hiding the extortion? What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. Chalo bhai. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be Wait, हम लोग कहीं Azkaban तो नहीं जाने वाले हैं, guys? Incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Okay, अब मेरे को बस लास्ट बंदे से बात करनी है. मैं जल्दी से पहुंचता हूं उसके On the पास. right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Okay, तो मैं पहुंच गया हूं अब Agabus पे. Excuse me, Mr. Filbert. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Okay. You should have spoke out. Or you should. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Okay, तो अब मुझे Natty से बात करनी है. मैं जल्दी से जाता हूँ, Natty से मिलके आता हूँ, guys. Revelio. Okay, तो मैं पहुंच चुका हूँ Natty से पास. अब She मेरे said she was going to the को Hog's search. Head. Perhaps I'll find her there. What the heck? अब मुझे उधर कहाँ ढूंढने जाना है? अभी तो आया यार. He must be around here somewhere. Revelio.
Natty's wand. She can Shit. cast without it. किसी ने नैटी She को किडनैप wanted कर me लिया to क्या? find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. लग रहा है किसी ने नैटी को किडनैप कर लिया. No Revelio. students get what's coming to them. या किसी ने नैटी को किडनैप कर लिया भाई. जल्दी से जाके बात करनी पड़ेगी, मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ नैटी के लिए. एशवेंटर हाइड आउट. ओके तो गाइज हम लोग एंटर कर चुके हैं एशवेंटर हाइड आउट के अंदर और मेरे को अब यहाँ पे नैटी को ढूंढना होगा. Led to this room. ओके There must be another way forward. Accio. A hidden door. ओके खुल गया. Natty must have been अब जल्दी से taken this जाता हूँ way. नीचे और बात करके आता हूँ. Find out वो quickly. देखूंगा. Revelio. I'd better be sure I'm not seen. ओके तो मुझे हाई छुप के जाना पड़ेगा यार. ये चीज मुझे नहीं पसंद वैसे, बट जब बोला है इन्होंने तो चलते हैं. और ये शिट, यहाँ पे कोई बॉस फाइट तो नहीं होने वाली है मेरी. फाइंड नैटी, फाइंड अब्बास Revelio. बिलबर्ड. ओके Only a Hogwarts student would be able to ओ Just keep an eye out. If people don't want me to steal their valuables, they better get a really good look. Hey! शिट यार, लड़ना पड़ेगा या क्या करना है मेरे को बताओ. I've robbed That'll be every good, yeah. travelling vendor that's passed through here. They never ओ नो, ये तो बड़ी फाइट हो रही है यहाँ पे. बड़ी फाइट हो रही है यहाँ पे तो 35 लेवल की प्लेयर है वो. I may go to Hogsmeade later. There are some trouble. They need to be reminded that we're still running things. ओके If I hear one more mention that plans have cost us spoils, plans what was agreed upon, so... Lower Hogsfield needs some stocks after our little visit. Trafficus Totalis. ओके Call out for me all you want. I shall be off spending my spoils in Hogsmeade. Ha ha. इसको मैं मार तो सकता हूँ बड़े प्यार से. Girl's been nothing but trouble. About time you locked her up. Be on the lookout for the girl's friend. If they're daft enough to try to come through here. Oi. I've never seen. Oh, I'm going to enjoy this. Protego. What are you fools? Repulsor. Bombarda. Confringo.
अबे मैं इनसे डर के निकल रहा हूँ, मैं इनकी ऐसी तैसी सूझ नहीं जा सकता This has become personal. Easy peasy lemon squeezy. It is so easy for me now. Revelio. Come on, give me a break. ये तो बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। ऐश वेंटर कैंप, ये है ऐश वेंटर कैंप। बताओ, लल्लू सा एरिया। अनआइडेंटिफाई काफ़ी सारी चीज़ें मिल तो गई हैं मुझे, बट मेरे को अभी भी लालच है और भी चीज़ें कलेक्ट करूँगा मैं जितनी हो सके। एक नोट मिला है और भी था यहाँ पे, मैंने कुछ देखा था। ओके, ये कुछ कॉइन्स मिले हैं। मैं बेफालतू का ही ना इतना छुपा के जा रहा था, इनके मुंह पे घुस के मारने वालों में से हूं मैं। वो वही करना चाहिए। must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Aloha Mr. Mora. Rabe. He will... ओह, अलोहा मोरा। ये लॉक खोलना पड़ेगा क्या मुझे? ओके, एंड हमारा लॉक खुल गया है। एक नया लॉक। क्या मिला? कुछ अच्छा मिला। इसको का वो मिला है मुझे। किससे बात करनी है मुझे? Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Okay. मुझे क्या करना है अब? Revelio. ओके, तो अब हमें मिलके Thank you, Mr. Isco. ओके, My तो pleasure. हमें And फाइंड thank you, my friend. ऑप्शनल। We owe our lives to ओके your ओके, वो bravery. ऑप्शनल है वो I may be चीज। too weak to disapparate with you both, but I can try. बट अगर ऑप्शनल है तो फिर भी मैं ढूंढ लेता हूँ। Confringo. Paid for a fight. These monsters must pay. Revelio. ओ, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। अब ऑप्शनल है तो क्या हुआ? Also Look, I Dibble's ढूंढ love लिया। letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. आ जाओ बच्चों। अरे फक मैन, मुझे लगा यहीं से आना होगा। Revelio. आई थिंक यहाँ से जाना होगा। राइट, लग तो रहा है यहीं से जाना होगा, या यहीं से जाना है। Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. एंड हमारा ये मिशन हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमें नैटी को रेस्क्यू करना था और उसके हस्बैंड को भी रेस्क्यू करना था। बताओ भाई, इतना छोटा सा मिशन 1.5 सेकंड का भी नहीं रहा, फेल डाला भाई। आओ जरा इसकी वाइफ से बात करते हैं।
I should have रूट से known. बात करते हैं. And you, the troll dispatcher. ऑफिसर. Oh, thank ऑफिसर goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Okay. The authority hasn't been much helped. या फिर क्या करूँ मैं? थोड़ा rude answer दूँ? Understood. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Okay. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Okay. बाद में बात करते हैं नाटी. एंड गाइस हमने द बेसिक फॉर ब्लैकमेल वाला मिशन भी कर लिया है कंप्लीट. और आई थिंक अब मेरे को कंप्लीट करना चाहिए अपना वेट अ सेकेंड. मैंने एक मिशन तो अपना कंप्लीट कर लिया है. अब मेरे को अपना ये कंप्लीट करना है. मेरे को करके ही रहना है. एंड आई थिंक मुझे उसके लिए इमेल्डा से बात करनी है. तो मैं जल्दी से पहुंचता हूँ इमेल्डा के पास. 5000 मीटर चलाना है मुझे. तो हम लोग मिलते हैं थोड़े देर बाद. ओके तो एक मेल भी आया है इसी बहाने. क्या मेल आया भाई? ओके एक बार देख लेता हूँ क्या मेल आया है मेरे को. हेलो फ्रेंड, द ब्रूम्स 3 ब्रूम्स. ओके देखते हैं हम लोग बाद में देखेंगे मेल वगैरह. बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं यार क्या इतना दूर चला के जाऊँ. मैं सोच रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड मैप खोलता हूँ और मैं सीधा ही ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ अपने आप को उधर की ओर. कहाँ 5000 मीटर चला के जाऊँगा यार. ओके तो मैं ज़रा अपने आप को या इधर कहीं पे वो कर लेता हूँ टेलीपोर्ट. और मैं भी बोल सकते हैं वी कैन से लाइक फास्ट ट्रैवल. ओके तो मैं अब जाता हूँ जरा बात करके आता हूँ. यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करता. ये मेरे झाड़ू. अरे बाप रे कितने बैंडेड कैंप्स हैं भाई इधर. तो बड़े बैंडेड कैंप्स हैं. बहुत ही ज़्यादा बैंडेड कैंप्स है बल्कि इधर तो. Betting on the dragon fights was the best decision. बट हम लोग पहुंच चुके हैं ये यहाँ पे इमेल्डा. I hope everything's all right. Gryffindor, over here. आया ग्लिफिंडोर. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. कितना सही लग रहा है ये जो Anyway, जुगनू don't let उड़ it go रहे to हैं. your head. Right then, enough chatter.
I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Okay. We'll I'm soon ready see for how the I challenge. fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Gryffindor. अच्छा आजा बेटी बताते हैं तुमको लूज Made it. अरे बाप रे कंट्रोल तो हो रही है थोड़ी सी अब That wasn't उतनी too अनबैलेंस नहीं है difficult. Excellent. Brilliant flying, if I do say so myself. अरे बाप रे 30 रिंग है टोटल ओके 18 20 तो हो चुका है Made it. Excellent. Oh, blast. अरे बाप रे बड़ा तेज हो गया यार ये तो एकदम से This is going well. एंड That wasn't too bad. मिस पेनल्टी मेरी 3 सेकंड की लगी है स्पीक टू एमेल्डा व्हाट That was व्हाई quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. competitive runs Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. अच्छा And इसके my पापा father, इसके well, he was दादा a chaser Quidditch for player Slytherin, थे but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in अच्छा, ये love नाग with शक्ति flying वाली the first है, time I saw the ground इमेल्डा। disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Okay. Any plan to play the Quidditch team? I बात take it करते you हैं want जरा to play for Quidditch a के बारे team, में। but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. ये अपने आप को मैंड्रिक बोल रही है। Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. Okay, it's been fun. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Gryffindor.
ओके, You take care of yourself. रिटर्न टू एलबी वीक्स के पास अब मुझे वापस से पहुंचना है। ओके, बट उससे सबसे पहले गाइज मेरे को अपना गेम सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पता नहीं गेम में इशू चल रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद माय गेम राइट नाउ, बट मेरा गेम क्रैश मार रहा है यार। ओके, तो ओके अब जरा से हम लोग चलते हैं एलबी वीक्स के पास, जो है हमारे हॉग्समेट में। ऑब्वियसली ये रहा फास्ट ट्रैवल। एलबी वीक्स के पास पहुंचता हूं मैं, जल्दी से उसको बताता हूं क्या बात हुई है मेरी और क्या परफॉर्मेंस गई मेरी। देन उसके बाद हमारा ये मिशन हो जाएगा कंप्लीट। देन उसके बाद मेरे को अभी सेबेस्टियन के पास जाना है। सेबेस्टियन के और एन के बीच में जो बातचीत हो रही है वहां भी जाके एक बार करेंगे। तो आज की थोड़ा सा एपिसोड गाइस थोड़ा सा लंबा होगा, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट समझ लो यार थोड़ा सा लाइक ना काफी लंबा हो रहा है, मतलब काफी ज्यादा पार्ट्स बन गए इस गेम के। अरे दादा, Thanks for stopping by. Hope to see you again. okay. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Okay. What will you do from here? What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades. Proved the naysayers wrong. Made all the hard work worth it. Okay, very excited. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Okay. Couldn't have done this without you. तो अब मैं आया ही हूँ एलबी What are we वीक्स looking के for पास, तो मैं today? क्यों ना अपनी जितने भी फालतू के मेरे पे सामान पड़े हुए हैं उसको बेच देता हूँ यार। पता नहीं क्यों ही पड़े हैं ये सब मेरे पे। ये सब बेचो, सब के सब बेचो, जो भी वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है, उसको तो बेच देता हूँ मैं। कोई यूज़ ही नहीं है इन सब का। और ये जो अनआइडेंटिफाई, ये तो मैं कुछ बिल्कुल नहीं बेचूंगा, ऑब्वियसली। ओके, तो ये 4 आइटम मेरे पास रहेगा। Thanks for stopping by. Hope to see एंड you हमने again. द स्काई इज द लिमिट, हमने ये मिशन भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सही जा रहा है गेम अभी इस वक्त। अभी मेरे पे और 1-2 क्वेस्ट और बचे हैं। ओके, तो मेरे को अब पॉपी से मिलना है और इसके बाद मेरे को सेबेस्टियन से। तो मैं सोच रहा हूँ सेबेस्टियन वाला हम लोग लास्ट में करेंगे। अब मैं करूंगा मीटिंग पहले पॉपी से। तो बट उन सब से पहले गाइस, उन सब से पहले मुझे जाना है अपने हॉग्सवर्ड्स, एक सेकेंड यार, हॉग्सवर्ड सीक्रेट रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। देन वहां से हम लोग फ्लू करेंगे जहां पे मेरे को जाना है पॉपी से मिलने। तो यार बहुत मजा आ रहा है अभी तो फिलहाल करने में, जो भी कर रहा हूँ मैं। नाटी का भी मेरे को आ गया। वाओ, saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. ओके, चलो। तो एक मेरे को आइटम मिला है गियर में, देखते हैं कौन सा आइटम मेरे को बेस्ट मिला है। जो ये दोनों ही वाहियात हैं मेरे इसके सामने, ऑब्वियसली। बट यार भाई ये वाहियात तो नहीं होना चाहिए था, बट आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं यार। इसको अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी मे बी, बट क्या बोल सकते हैं। और क्या मिला है? ओके, होली शिट, होली शिट, होली शिट मैन, शिट, क्या जबरदस्त चीज मिली है। ये हम लोग बाद में पहनेंगे गाइस। अभी के लिए हम लोग क्वेस्ट पे फोकस करते हैं। और एक बार जरा मैं मैप खोल के देखूं तो मैप मेरा कहाँ जा रहा है। तो मैं एक बार वर्ल्ड मैप खोलता हूँ। ये मुझे कहाँ बुला रही है? पॉपी। तो ये यहीं कहीं बुला रही है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ, पॉपी से मिलता हूँ। और ये पॉपी से मेरा बहुत टाइम के बाद मिलना हो रहा है। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। होपफुली कुछ अच्छा ही हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो स्टोरी रिलेटेड। और मुझे क्यों लग रहा है कि इसने मेरे को यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे क्यों लग रहा है कि ये मेरे को उसके लिए तो नहीं बुलाई है। ओके, तो ये रही हमारी पॉपी। I can do this. I
can do this. They will want to help. आ गया मैं. Is this where we're meeting the Centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Okay. Centaur are known for being wise. Don't know more than rest of I us. suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be तो honest कुछ with छुपा them रही है about what we're लौंडिया. trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Shit. ये कौन आ गया? अरे भाई साहब, इन्होंने हमें घेर क्यों लिया? I think हमने तो इनकी हेल्प करी थी ना? तो अभी आके हैरी पॉटर बोलेंगे? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and अरे it भाई spoke साहब. back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. What? ये हमारे को मारने के लिए आए हैं? Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Okay. Mark my words, Doran. If I ever see them again, मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो है it दूसरा will वाला be ये all धोखा देगा three इसको of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Okay, तो हमें इसने हमें कुछ मिशन दिया है जब हमें करना होगा. Then उसके बाद हमें वापस इसके पास आके कुछ I think complete करना होगा मुझे. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't the moonstone common? I trust him. He was annoying. I don't know, but I am inclined to believe him. What with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Okay. तो अब हमें क्या करना है? I'll let you know what I find. What? बस इतना ही था मिशन? अरे ये क्या था यार? ओके, तो अब हम लोग जाते हैं सेबेस्टियन से मिलने. और क्या ही कर सकता हूँ मैं, इतनी दूर आया हूँ मैं. ओ भाई, क्या था ये मिशन? ये मिशन था क्या?
मुझे लिजिट समझ नहीं आया। चलो कोई नहीं, वट एवर, हम लोग जल्दी से जाते हैं, सेबेस्टियन से मिलते हैं, सेबेस्टियन और एन से मिलते हैं जो उसके बाहर है, वेट कर रही है हमारा मतलब। तो जाता हूँ मैं उससे एक बार बात करके आता हूँ, फिर हम लोग शायद ये मिशन को जल्दी कंप्लीट कर देंगे और ख़त्म भी कर लेंगे। ओके, तो 80 मीटर्स दूर है। Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Okay. अब जरा मुझे Solomon सेबेस्टियन can't से बात take Anne करना from होगा। Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Okay, तो चलो सेबेस्टियन से बात करते हैं। I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Okay, we can do this. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Okay. Might your uncle report? Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Okay, very well. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Okay. See you soon. See you soon. तो इन द शैडो ऑफ द होप भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब जरा देखो मैं और क्या रह गया है। तो मैं गाइस सोच रहा हूँ कि देखो मैंने जितने भी साइड मिशंस करने थे वो तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम लोग ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हम लोग ये एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नाटी से मिलेंगे, देन उसके बाद हम लोग मेन मिशन पे फोकस करेंगे और बस यही दो है। Truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. ओके, इसने कोई फाइनल ब्रूम अपग्रेड कर दिया है क्या? एलबी वीक्स का मेरे को मैसेज तो आया बट व्हाटएवर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड राइट नाउ। हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एपिसोड को। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब इस गेम की स्ट्रीम करना स्टार्ट करता हूँ। तो मे बी एंड मे बी नॉट, ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस एपिसोड, इस हॉगवर्ट्स लेगेसी सीरीज की वीडियो एपिसोड की। देन उसके बाद हम लोग सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे खेला करेंगे और जितना खेलेंगे वो लाइव स्ट्रीम पे ही होगा, चाहे 1.5 घंटा खेले, 2 घंटा खेले, 4 घंटा खेले। पर अब मैं सोच रहा हूँ यार सिर्फ लाइव स्ट्रीम करूँगा, क्योंकि यार ये एपिसोड बनाने में और रेंडर करके एडिट करके डालने में ना बहुत टाइम लग रहा है मेरा, प्लस और उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यार। 20 व्यू आ रहे हैं, 15 व्यू आ रहे हैं, 7, 8, 9 व्यू आ रहे हैं। तो लाइक यार वो वर्थ इट नहीं लग रहा है कि इतना टाइम इन्वेस्ट करने में मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ अब से मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीम करूँगा। और मे बी आई डोंट नो, मे बी इस वीडियो के बाद और मे बी इस वीडियो के बाद मे बी 2-4 और वीडियो के बाद, बट मैं आपको बता दूंगा जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। तो प्लीज़ यार वो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया यार। लाइव स्ट्रीम में मिलना यार, लाइव स्ट्रीम में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे गेम, है ना। तो चलो यार बाय,
टेक केयर, खुद का ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी। और चलो यार, बाय 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 एंड बाय।